Hey everyone, welcome to the second part of fifth chapter, the fundamental unit of life. In today's video, we'll learn about structural organization of a cell. There are three features that are present in almost every type of cell. The presence of plasma membrane that surrounds the cell, presence of nucleus inside that contains genetic material, and cytoplasm which fills the cell. All the activities that takes place inside this cell and the interaction of cell from its exterior, it is possible due to presence of these three features. Plasma membrane, this is also known as cell membrane, इसको cell membrane भी कहते हैं हम लोग. This is outermost covering of the cell. ये cell के बाहर की तरफ एक covering बनाता है. It separates the content of the cell from its external environment. Because this covering is the outermost covering, ये cell के बाहर जो cell exterior होता है, उससे cell के content मतलब cytoplasm और अंदर के organelles को separate करता है. It's a barrier between cell exterior and the cellular content inside. And it allows entry and exit of some of the material. कुछ मटेरियल बाहर से अंदर की तरफ आ सकते हैं, कुछ मटेरियल अंदर से बाहर की तरफ जा सकते हैं. इसको ये मेम्ब्रेन ही अलाउ करता है कि किस मटेरियल को अंदर से बाहर जाना है और किसको बाहर से अंदर जाना है. बट it is also going to prevent the entry of some of the material. कुछ मटेरियल के मूवमेंट को ये रोकता भी है. ठीक है. दिस इज वाई बिकॉज इट इज सिलेक्टिव. ये चूजी है. कुछ मटेरियल्स को अंदर आने देगा, कुछ को नहीं आने देगा, कुछ को जाने देगा, कुछ को नहीं जाने देगा. Because it is selecting the material, the membrane is called as selectively permeable membrane. This acts as selective permeable membrane. Okay. Because the plasma membrane is involved in transport of material across the membrane, we'll try to understand the mechanism that is responsible for such transportation. One such mechanism is known as diffusion. Diffusion is spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to the region of low concentration. This is spontaneous movement. That means there is no requirement of energy. बाहर से कोई energy या effort लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर किसी कोई सब्सटेंस यहाँ पर ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेटेड, सेल के बाहर में उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, तो उसका नेचुरली वो सेल के अंदर अपने आप आ जाएगा. ठीक है. और इसी तरीके से अगर सेल के अंदर किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट इट विल कम आउट ऑफ द सेल. ये मैकेनिज्म दिस इज फॉलोड फॉर गैसियस एक्सचेंज अक्रॉस द मेम्ब्रेन. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जैसा कि हम जानते हैं, ये दोनों गैसेस हमारे सेल्स में इनका गैसियस एक्सचेंज होता है. सो दे कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय दिस प्रोसेस ऑफ diffusion. What happens exactly is that we know that carbon dioxide is cellular waste. ये सेल में मेटाबॉलिज्म के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जमा होता है, एक्यूमुलेट होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और ये सेल के लिए टॉक्सिक है. सो दिस हैज टू बी रिमूव्ड आउट of the cell. This has to be excreted out by the cell. So what happens exactly? Now, there is cellular concentration of carbon dioxide which is higher than its exterior. So spontaneously this carbon dioxide is going to come out of the cell. Okay. Similarly, when the concentration of oxygen decreases inside the cell and it is higher outside the cell, there will be spontaneous movement of oxygen from outside to inside. Thus, there is a very important role of diffusion in gaseous exchange between cells and its external environment. Osmosis. Water also obeys the law of diffusion. This movement of water through a selectively permeable membrane, it gets affected by the amount of substance dissolved in water. Therefore, osmosis can be defined as a process where
water gets diffused across a selectively permeable membrane from a region of low solute concentration to a region of high solute concentration. ठीक है, पानी डिफ्यूज करेगा थ्रू द मेम्ब्रेन जहां पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इधर से जहां पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है वाटर विल मूव. ठीक है, राइट. तो सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पर वाटर का डिफ्यूजन डिपेंड करता है. Now we have a condition कि what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt. Sugar or salt, these are substances dissolved in water, right? So if you place an animal cell है, उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. नाउ सेल के अंदर भी कुछ वाटर का अमाउंट होगा, सेल के बाहर भी कुछ वाटर है. कहाँ सॉल्यूट ज्यादा है, कहाँ सॉल्वेंट कम है, we'll try to understand in the next slide. There are three conditions. The first one is hypotonic solution. Hypotonic solution किसे कहते हैं? So if you look into this diagram, you'll see that we have taken salt as solute. NaCl, that is sodium chloride. This is the solute that we have dissolved in water, right? Now the concentration of solute in the medium, you see it's less than what you have inside the cell. सेल के अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 20% है, बाहर 10% है. उसी तरीके से वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर 90% है जो कि ज्यादा है, और सेल के अंदर इट इज लेस 80% है, राइट. सो now we can say that the medium surrounding the cell has higher water concentration than the cell. Similarly, because the solute concentration inside the cell is higher and outside the cell in the medium is less, so solution is dilute and we call it hypotonic solution because hypo stands for less. Hypo का मतलब होता है कम होना. तो इसलिए क्योंकि बाहर में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो हम लोग इस सॉल्यूशन को बोल रहे हैं कि ये हाइपोटोनिक है. अब वाटर मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस. वो बाहर से भी अंदर आ सकते हैं, अंदर से भी बाहर जा सकते हैं. लेकिन क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, बाहर ऑलरेडी वाटर बहुत ज्यादा है, तो बाहर से वाटर जितना अंदर आ रहा है उससे काफी कम वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर जा रहे हैं. सपोज अगर 10 मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर आ रहे हैं तो मे बी अंदर से बाहर सिर्फ 2 जा रहे होंगे या 5 मॉलिक्यूल्स जा रहे होंगे. तो ओवरऑल द नेट रिजल्ट विल बी दैट वाटर is eventually going to get inside and therefore cells water gain करेंगे और eventually swell up कर जाएंगे. ठीक है, सेल की swelling हो जाएगी. The next condition is when we have isotonic solution. Isotonic solution किसे कहते हैं? Now this iso term it stands for same. आप देख सकते हो यहाँ पे कि मीडियम में जो conditions हैं exactly वही condition सेल के अंदर भी है. It is 10% sodium chloride in 90% of water. तो जब भी कभी ऐसा condition होता है कि सेल के बाहर सेल के अंदर same conditions हैं, तो we say that the medium has exactly the same water concentration as the cell and same solute concentration as the cell. So then there won't be any water movement. There is no net water movement across the plasma membrane. और इसी तरीके से सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. Now actually water moves in both the direction. तो वाटर अंदर से बाहर भी जा रहा है और बाहर से अंदर भी आ रहा है. But the amount of water that goes outside is the same amount of water that gets inside. जो भी water molecules बाहर जा रहे हैं exactly same number of water molecules अंदर भी आ रहे हैं. तो जब आप net movement निकालोगे तो it becomes nothing, it becomes zero. So because there is no movement of water molecules, no net movement of water molecules, cell का size change नहीं होता है. ये it doesn't swell up and it doesn't even shrinks down. Third and final condition is when you place a cell in hypertonic solution. Hyper, this term stands for more.
ठीक है, मतलब ज्यादा, जैसे हाइपो कम के लिए था, हाइपर इज फॉर मोर. नाउ यू कैन सी दैट द concentration of water inside the cell is more, outside it is less, and similarly the concentration of salt outside is more and inside the cell it is less. So we can say that medium, the outside medium, it has lower concentration of water. Water का concentration बाहर में कम है, और because salt का concentration बाहर ज़्यादा है, so the outside solution is very much concentrated. ठीक है, इसलिए इसे हम hypertonic solution कह रहे हैं. इसलिए नाउ अब अगेन वाटर का मूवमेंट तो दोनों डायरेक्शन में होता है, अंदर से बाहर भी जाएगा, बाहर से अंदर भी आएगा, लेकिन बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर इनसाइड, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लीविंग द सेल विल बी मोर. अगर अंदर से बाहर 10 मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं तो मे बी बाहर से अंदर सिर्फ 2 या 3 मॉलिक्यूल्स ही आ रहे हैं. ठीक है, तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी फ्रॉम cell to the cell exterior, from cell to the medium. So cell is going to lose water by osmosis. ठीक है, and therefore it will shrink. All three situations are shown here in one single image. You see that the direction of osmosis is shown when you have cell placed in hypotonic solution, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बाहर में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो, तो आप देखेंगे कि वाटर गेट्स इनटू द सेल, वाटर मूव्स इनसाइड द सेल एंड देयरफॉर सेल में स्वेलिंग हो जाती है. नेक्स्ट कंडीशन इज जब आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को प्लेस किया है. ओके, दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ एन आरबीसी प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो सेल से पानी बाहर की तरफ मूव करता है थ्रू ऑस्मोसिस. ठीक है, इसलिए सेल श्रिंक कर जाता है. और अगर ऐसा कोई सिचुएशन है कि सेल आइसोटोनिक कंडीशंस में है, तो फिर नेट मूवमेंट जीरो होता है. जितने वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं उतने ही सेम अंदर आ जाते हैं, इसलिए देयर इज नो नेट वाटर मूवमेंट एंड सेल इट रिमेन्स द सेम साइज. देयर इज नो स्वेलिंग अप, देयर इज नो श्रिंकिंग डाउन. Another structure here is cell wall, जो कि एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है. प्लांट सेल्स में और कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जैसे फंगी में, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है. And in all of them, wherever cell wall is present, it is present as a tough, rigid covering outside the plasma membrane. If this is a cell covered by plasma membrane, you'll have another tough, rigid covering outside it called as cell wall. ठीक है, ये सेल वॉल प्लांट्स में सेल्यूलोज का बना होता है मेजरली. इसके अलावा दूसरे कंपाउंड्स भी होते हैं लाइक हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन. सेल्यूलोज मेजर कंपोनेंट है. ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है एंड इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स. And when a plant cell is kept in water where in a hypertonic solution and it is undergoing shrinkage because cell is losing water, तो shrink करने पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर हो जाता है. इस प्रोसेस को we call plasmolysis. What are the advantages of cell wall? Now, in all those organisms where cell walls are present, like plants, fungi, and bacteria, they are able to withstand the very dilute external media without even bursting. कैसे होता है ऐसा? Now, if you place them in a hypotonic medium, cells are going to take up water by osmosis, and they are even going to swell up. And after swelling up, they are going to build up some pressure against the cell wall. ठीक है, ये अगर एक सेल है, आप ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द सेल वॉल. तो ये सेल मान लो आप स्वेल कर गया है वाटर इनटेक की वजह से, तो दिस इज गोइंग टू बिल्ड सम प्रेशर अगेंस्ट द वॉल. Wall is also going to exert the same amount of pressure against the swollen cell. तो इस चक्कर में सेल बर्स्ट करने से बच जाता है और ये किसी भी ऐसे सेल में, एनिमल सेल फॉर एग्जांपल, जिनके पास सेल वॉल नहीं होता है, उनसे ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है प्लांट सेल्स में या फंगल सेल्स में, बैक्टीरियल सेल्स में, एंड दे आर एबल टू विथस्टैंड दीज एडवर्स कंडीशंस. That's all in this video.
In next video, we'll talk about nucleus.